अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा गाइस, अब तक हम चूँकि लिसनिंग पढ़ रहे हैं, तो अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। तो आज भी हमारा तरफ प्रैक्टिस सेशन होगा। हम अभी प्रैक्टिस ही करेंगे। जितना को हमें थ्योरी प्रैक्टिकल पता होना चाहिए तो वो हमने लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम स्टार्ट करें। सर ये आज सेकेंड डे, कल से ये ट्रिक स्टार्ट हुआ है। लिसनिंग वाला नहीं, जो स्टार्टिंग कल से हुई है ना इस सेशन के आइल्स वाले, या पहले ये हो चुके हैं? ये सेशन का 3rd वीक है। अच्छा। पहले 2 वीक्स में हमने राइटिंग किया है। तो जो न्यू सेशन कोई स्टार्ट होने वाला है स्टार्टिंग से? अब स्लैक पे देखें, काफ़ी आवर्स से सेशन स्टार्ट हुए हुए हैं। आई थिंक सो रिसेंटली इस इसमें मंडे से ऐड काफ़ी करना सेशन चाहूंगी। स्टार्ट हुए। जी, जी। सर हरीश, आप जो है ना, हमारा सेशन 2 जून से स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पे भी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा रात 10 बजे एक सेशन है, वो मंडे से स्टार्ट हुआ है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह के 9 बजे वाला भी एक सेशन है, वो भी आई थिंक मंडे से ही स्टार्ट हुआ है। जी मैम। और रही गई बात राइटिंग मॉड्यूल की, जो हमने पहले पढ़ लिया, तो पहले हमने थ्योरेटिकल ज़्यादा फोकस किया था। तो अभी आई थिंक सो नेक्स्ट वीक दोबारा राइटिंग का ही है हमारा। आप कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं हमारे स्लैक पे। सर मेरी तो आवाज ठीक, आ रही है, बहुत हल्की है लेकिन आ रही है। सर अब आ रही है। जी, जी, आ रही है। सर हमारा राइटिंग टास्क कंप्लीट हो गया। राइटिंग टास्क हमारा, जो हमने 2 वीक्स उसके कंप्लीट कर लिए, लेकिन वो 2 वीक्स बहुत ही मैक्सअप रहे हैं क्योंकि ईद हॉलीडेज थी। लेकिन हमारा अभी 3rd आई थिंक सो 4th या 5th वीक दोबारा राइटिंग पे ही है दोबारा। ओके सर, तो अभी हमारा करंटली लिसनिंग का चल रहा है। करंटली ये वीक लिसनिंग का चल रहा ओके सर, थैंक वालेकुम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कल से प्रैक्टिस करी हूँ सर। जो अहमद है उन्होंने बताई थी एक साइट वहां से। तो पहला मैंने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया उसमें मेरे 19 आए, और आज मैंने किया तो 13 आए। तो लिसनिंग में काफी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये कैसे प्रैक्टिस अच्छी होगी? आपका बेसिकली लिसनिंग का जो स्किल्स है ना वो वीक है। और ये नेचुरल है, ये सिर्फ आपका नहीं, काफियों का होगा, मेरा भी था, अभी भी है इवन के। तो उसका उसका बेहतर तरीका ये है हमारे कि साथ हम। भी यही सेम चीज हुई है। हम भी कल प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे ही बहुत कम कम मार्क्स आए हैं। अच्छा, जैसे अच्छा, और आज मैं हम दोबारा। जी, जी, बोलें। भी सबसे ज्यादा हो रही है मैप पे। वो जल्दी जल्दी बोल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है क्या, कहाँ पे क्या ऑप्शन आना था, कहाँ पे नहीं। फर्स्ट पेज अच्छा, वाला क्लियर हो जाता है, मैपिंग जहाँ पे आती है वहां पे ऑप्शन समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक फ्लुएंट में बोलते जाते हैं। तो फिर ऐसे समझ भी नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह मैं करता हूँ। वैसे तो इसके बहुत से टिप्स और ट्रिक्स हैं। कुछ लोग तो स्किमिंग में बहुत फोकस करते हैं, कुछ लोग कीवर्ड्स को हाईलाइट करने में बहुत फोकस करते हैं। तो मैं स्किमिंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करता क्योंकि वो मुझे इवेंचुअली हेल्प नहीं करते कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं समहाउ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लूँ और उसके आंसर्स पढ़ लूँ कि ये आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। और फिर मैं ध्यान देता हूँ पूरी ऑडियो पे। तो अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप लोगों ने अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। और ये कोई अगेन कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है, ये जस्ट इस तरह के आप इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं इतने, आप हेडफोन लगाएं, उनको सुने विदाउट एनी विजुअल। आंखें बंद करें, हेडफोन लगा के उनको सुने और उनको अंडरस्टैंड करें, उनको पूरा फोकस करें जितना कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें ना आदत होती जाएगी लिसनिंग, ये इंग्लिश सुनने की। अभी शायद आप लोग इतने अवेयर नहीं है इंग्लिश सुनने के ज़्यादा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप जिस तरह बता रहे हो, आप दोनों, आप
कि ये मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ये सारी इशू रिजोल्व हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। अभी या तो आपने सिर्फ कल प्रैक्टिस की है तो फर्स्ट टाइम तो इट इज वेरी ओके अगर इस तरह आपका रिजल्ट आया। फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मेरा भी थिंक सो 16 या 17 आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता रहता है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि वो क्या बोल रहा है, किस तरह बोलता है, तरीकाकार पता चलता है सारा। तो अभी भी हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, देन सी व्हाट हैपन। लेट मी सर शेयर मेरा माय एक स्क्रीन। सवाल है। जी जी पूछे मेरे। सर वोकेबलरी की कोई ऑडियो हो सकती है? जैसे हम वोकेबलरी टेक्स्ट में हम याद करते हैं वोकेबलरी को, तो सुनने में भी कुछ ऐसे हो सकता है कि वर्ड्स की जो ये है वो वोकेबलरी हो? ये शायद आपको YouTube पे सर्च करने पे ही मिल जाए, वैसे सच मैंने कभी इस पे सर्च करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मे बी YouTube पे अगर आप सर्च करें वोकेबलरी ऑडियो या किसी भी कीवर्ड्स के साथ तो शायद आपको मिल सकती ओके सर, थैंक यू। है। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, विजिबल है आपकी स्क्रीन। ठीक है, चलें हम चूंकि एकेडमिक कर रहे हैं एकेडमिक को देखते हैं। अच्छा, फुल टेस्ट भी कर सकते हैं हम या हम सर ये दूसरी क्वेश्चन वाइज भी वेबसाइट कर है। सकते हैं। जी ये दूसरी वेबसाइट है इग्नोवेट, यहाँ से भी कर सकते हैं, आइल्स सिमुलेशन से भी कर सकते हैं। कल हमने आइल्स सिमुलेशन से किया था जी। सर जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे, और इससे भी कर सकते हैं, जिससे ओके। मर्जी कर लें, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ओके, पूरा टेस्ट ही करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मैं ऑडियो चलाने लगा हूँ कि आपको आवाज़ आ रही है इसकी कि नहीं? सर नहीं आ रही। सही आवाज नहीं नहीं आ रही। अच्छा देखते हैं कुछ। सर आई थिंक सो जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसके साथ ही ऑप्शन है ऑडियो में। हाँ वो भी आती है पर मैंने वो मैं देखा इंसाइड अगर कोई अंदर से ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलो मैं रीज्वाइन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, जो आप अभी बता रही जी थी वालेकुम ट्रैक अस्सलाम। जो 9 AM सर से जो आपको 10 AM से स्टार्ट हुआ है वो मंडे से हुआ है स्टार्ट? सर हमारा मैंने आपसे पहले भी बताया है 10 AM वाला 2 जून से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आप जो न्यू वाले स्टार्ट हुए ना मंडे से ट्रैक 2, वो एक जी। 9 बजे वाला है सुबह के और एक 10 बजे वाला है रात के। और ओके। बाकी आप स्लैक पर देख सकते ओके। हैं। जी। और सर शहरियार स्टार्ट करवाते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन देख रही थी। तो मैम रिबा आप भी बता रही हैं कि आपके आई थिंक 19 ठीक हुए MCQs। तो इट्स ओके, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, लेकिन मेन चीज जो डिपेंड करती है ना, वो इस बात पर है आपकी कंसिस्टेंसी पर और आपके हार्ड वर्क पर। मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार जाओ, हाँ मेरे इतने ठीक हुए हैं इतने गलत हो गए।
आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाओगे, इंशाल्लाह आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। यस मैम, प्रैक्टिस तो मैं रोज कर रही हूँ। बस इसे छोड़ना नहीं है आप। जी, ओके, अच्छा थैंक यू। अच्छा गाइस, मुझे अब बताइएगा, आपको Test आवाज आ रही है? 4. This is the IELTS listening जी अब test. आवाज आ रही है। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। अच्छा, फोकस करिएगा ऑडियो पे सब, और उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है उसमें कोशिश करें ये पढ़ने की, ठीक है? और सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। और लेट्स स्टार्ट नाउ। Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a supervisor in a supermarket talking to a new worker on her first day. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Charlotte. I'm Caden, one of the supervisors. Welcome to the team. Hi, Aidan. It's Caden. I'm so sorry. Oh, don't worry. People often get my name wrong. They never know how to spell it. It's Kaeden, in case you ever need to write it. I'll try and remember. So, there are a few practical things you need to sort out this morning. Then I'll show you what you're going to do today. The email I received said to go to the front desk to show my letter of appointment and pick up my badge. You'll need that for the staff room and other areas of the supermarket where shoppers aren't allowed. So, after you've finished at the front desk, I'll take you to the staff room. Put your coat and rucksack in one of the lockers there. Take whichever one is free. Will I have a key? Yes, try not to lose it. At the end of the day, leave it in the door for the next person to use. Will do. You also need to go to the HR department to see Tiffany. She's really helpful. I was told to bring my passport with me. HR need to take a note of the number in it. That's right. Or you can show your ID card. I don't have one of those. Okay. Tiffany will give you a uniform. They have lots in different sizes, so you just tell her what you need. I won't come with you to HR. I've got to go and sort something else out. Problem with a bread slicer. Is the HR office near the staff room? The staff room's on the first floor, and HR are a couple of floors above that, on the third floor. There's a staircase outside the staff room. Okay. When you're finished with HR, come and find me in the bakery section of the shop. I'm looking forward to getting started. I'll just give you my phone number in case you can't find me. Have you got your phone there? Yes. Okay. Ready? It's 0412 66 5903. Okay. Done. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. सर वो फर्स्ट फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है? It's third floor. वो थर्ड फ्लोर ही था। थर्ड फ्लोर।
और उसने फर्स्ट फ्लोर पहले ट्रैप किया है। उसने फर्स्ट फ्लोर का बताया कि स्टाफ रूम फर्स्ट फ्लोर पे एंड द एचआर ऑफिस इज कपल ऑफ फ्लोर्स अबव देन द स्टाफ रूम। फिर उसने एंड थर्ड बोला। तो यही आई थिंक सो मिस्टेक है। हम अंडरस्टैंड भी करना होता है साथ साथ उसे कि वो कहना भी क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे उसने ट्रैप करने की हमें कोशिश की है फर्स्ट के साथ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैंने जब भी मैंने प्रैक्टिस की है ना, तो ये जब नंबर्स वाले कोई आता है ना, तो वो मुझसे मिस हो जाता है, वो मुझसे कैच नहीं करना पा रहा। इसी तरीके से जैसे स्पेलिंग भी हो ना, लेंथी है, तो उसमें से कोई ना कोई एक मिस हो जाता है। ये हमेशा मेरे गलत हुआ है। अभी अभी जब इसने स्पेलिंग बोली है शुरू में या फिर ये नंबर बोला है, तो आपने ट्राई किया साथ लिखने की, लिखा गया? जी, लिखने की कोशिश की लेकिन पूरा नहीं हुआ। अच्छा, पूरा नहीं हुआ। उसकी क्या रीजन हुई पूरा ना होने की वजह से? क्या आपसे आप फोकस नहीं कर पाई साथ साथ लिखने में और साथ साथ लिसनिंग में, ऐसा हुआ है? जी, ऐसा ही हुआ। तो उसकी बेस्ट वे यही है कि आप की जो लिसनिंग लिसनिंग आपकी काफ़ी वीक है अभी, तो उस पर आप फोकस करें ज़्यादा। मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन में मैं आपको कुछ पॉडकास्ट बताऊंगा। मैं बल्कि स्लैक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो उसको सुने और अब जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं उससे अंडरस्टैंड करें पॉडकास्ट को। आप पॉडकास्ट खुद भी देख सकते हैं अपने यूट्यूब पे देख लें, कोई भी शायद वेबसाइट्स भी होती हैं पॉडकास्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर इंग्लिश। मीन्स जब इंग्लिश। लेंथी हो ना, तो फिर मुझे पिक नहीं होता। जैसे नंबर्स हो वो लेंथी होता है, तो साथ साथ लिखा नहीं जाता। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही है। फर्स्ट टाइम तो अगर नहीं हुआ ऐसा तो बिल्कुल ओके है। फर्स्ट टाइम मुझसे भी नहीं हुआ था ऐसा। ये तो शायद मैं आई थिंक सो फोर्थ या फिफ्थ टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, और इस वजह से मैंने ये कर लिया। मुझे नहीं पता इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, वो एंड पे हम चेक करेंगे। लेकिन पॉसिबल है ये थर्ड जो फर्स्ट कह रहे हैं वो शायद फर्स्ट ही हो, लेकिन मेरी समझ में तो थर्ड आया। तो इस वजह से मैं भी ये लिख सका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से ही है ये सारा। फर्स्ट टाइम तो मेरा भी यही हाल था। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी नेचुरल एंड स्टे फोकस्ड। ओके ओके, सर, थैंक यू। फोकस सर ऑन दिस नाउ। ताहा आपका Now हैंड रेज। listen and क्या क्वेश्चन? हाँ, किसी का क्वेश्चन है? ओके, let's complete this part one first and then we'll take question. Focus on this now, guys. answer questions 7 to 10. So, Charlotte, your tasks today are in the bakery section, on the sushi counter, and on the meat and fish counters. The first job is to check sell-by dates on the bread and cakes. If any of the dates are today's, put a new price label on the packaging. What if any of the labels are yesterday's dates or older? Do I throw those items away? Yes, but that shouldn't happen. We check the stock every day. When something needs a new price label, put a yellow one on the package, next to the original price. Okay. After that, you'll go to the sushi takeaway counter. Will I be preparing boxes of food? For today, you'll just be helping the staff. Yes, of course. You'll see lots of flat cardboard boxes at one end of the counter. Beneath those is where we keep the plastic boxes. We run out of those really quickly, so you should bring more from the storeroom. Is that my only task on the sushi counter? No, you also need to clean the area where they prepare the dishes. There are cloths and bottles of spray by the sink. Oh, and please make sure you clean that too. Sure. That's important, isn't it? Absolutely, but you mustn't wash up knives. You have to do some training before you're allowed to touch sharp objects. What should I do if there are any? Ask someone to put them in the dishwasher. Okay, thanks. I don't want to get anything wrong. Don't worry, you'll be fine. And I'll be around to help. Right. Finally, the meat and fish counters. You need to clean the area where staff serve customers, including wiping the weighing scales. Okay. Anything else? The fish is laid on ice, but when that starts to melt, you'll need to get more from the cold room.
I know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me? You won't be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when you take anything out of the cold room. The temperature's low enough in there to get frostbite from touching things. Understood. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. अच्छा गाइस, तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ और यहाँ पे कोई डिफरेंट कीवर्ड आ रहा है, कोई डिफरेंट वर्ड है, तो वो मुझे बताए कि यही सबने नोट डाउन किए। एनीवन? तो वैसे उन्होंने थर्मल ग्लव्स बोला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड आना, तो ग्लव्स ही थी। हाँ, उन्होंने थर्मल का सोचा, लेकिन वन वर्ड की वजह से सिर्फ हमें ग्लव ही लिखा। बाकी इधर प्लास्टिक, पहले मैं कंफ्यूज हुआ था, कार्डबोर्ड इन्होंने पहले बोला था, लेकिन एंड पे प्लास्टिक ज्यादा सेंस बना गया तो मैंने प्लास्टिक लिख दिया। यहाँ पे न्यू के साथ मैं कंफ्यूज हुआ था कि यूज न्यू लेबल्स, अक्सर न्यू बोल रहा था वो बीच में, लेकिन एंड पे येलो ज्यादा सेंस बनाई उसने, मैंने येलो लिखा। ये थोड़ा सा टफ इस तरह था क्योंकि आइस वो पहले बोल चुका था और बाकी ये कोल्ड रूम फिश वाले कीवर्ड्स इसने बाद में बोले थे, तो ये थोड़ा सा फोकस करने वाला टास्क था। तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, फिर एंड पे सबको देखते हैं कि किस तरह। Part 2. You will hear a podcast by a running coach giving advice about taking up running and giving information about her club. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. My name's Liz Fuller, and I'm a running coach with Compton Park Runners Club. Welcome to my podcast. If you're thinking about taking up running, I'm here to help. There are many training programs available online, which aim to help people build up to running 5 kilometres. Some of them are great, and thousands of people of all ages are taking part in 5-kilometre races across the country as a result. People like them because they're easy to follow and don't push them too hard. However, they don't work for everyone, especially if you suffer from something like a heart condition or asthma, because they're aimed at people with average fitness and running ability. Another thing is that everyone is different, and if you have any specific questions related to your needs, there's no one to provide any answers. I have a couple of simple tips I always give to new runners. I expect you've been told to run very slowly until your fitness increases. Well, I find that can prevent progress. You should run at a speed that feels comfortable, but time yourself and try to run a bit faster each time. Listening to music can be very helpful. It takes your mind off things and helps your body get into a rhythm. I'd say that is better than running with a friend, especially as most people are competitive, and that's not what you want when you're just starting. I don't think the time of day is especially important. Some people are better in the evening, while others are morning people. But you need to be consistent, so aim to train regularly. Twice a week is enough to begin with. Before you hear the rest of the podcast, you have some time to look at questions 15 to 20.
Now listen and answer questions 15 to 20. New members often say to me that they've been put off running either because they lack confidence, or they don't have time, or they think they dislike running. Kerry, for example, joined the club 2 years ago at the age of 40. She'd always enjoyed running at school, but wasn't sure if she'd be able to do it. She was worried about being left behind and being the slowest runner. But she says she was made to feel so welcome, she soon forgot all about that. James had always hated the idea of running, but a friend encouraged him to come along for a taster session, and he hasn't looked back. He never misses a training session, despite having a really demanding job. Leo was worried about having to commit himself to training sessions every week and wasn't sure he'd be able to fit training into his busy schedule. But after experiencing a lot of stress at work, he came along to us and gave it a go. Now he says he feels much more relaxed and he looks forward to his weekly run. Mark is quite typical of our new members. He's never considered himself to be a sporty person, and it was only when he retired that he decided to take up the challenge of trying to run 5 kilometres. It took him months to find the courage to contact us, but felt reassured immediately, as there were other people his age who were only just taking up running for the first time. My own journey hasn't been easy. I did my first marathon when I was 37, after having had 2 kids. My husband had been running marathons for years, but I never dreamed I'd be doing one with him. I managed to complete it in 4 hours, but I felt like giving up halfway through. It was only the support of the spectators that kept me going. I do think signing up for a race of whatever length is motivating, whether it's 5k or 25k, because it's good to have something to work towards, and it gives you a sense of achievement. I did my first 10k after only 6 months, which was certainly very challenging and not something I'd necessarily recommend. But after you've been training for a few weeks, it's worth putting your name down for a 5k. Some people find they only need a few practice runs before taking part in a race, but I'd give yourself a couple of months at least. Well, I hope that's given you a really good idea of... That is the end of part 2. अच्छा You गाइस, now have 30 किसी को seconds to check. इसमें कुछ समझ आई? मेरा ये लास्ट में तो काफी ट्रिकी था। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ अभी भी कि क्या हो सकता है। सबने किया 100 साथ, कोई डिफरेंट लगा किसी को कुछ? सर ऊपर वाले तो सारे इजी थे, लास्ट वाला हमें भी थोड़ा ट्रिकी लगा। 20। हाँ, इसमें मुझे समझ नहीं आई, या तो विद इन फ्यू वीक्स ऑफ टेकिंग अप रनिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग सेवरल प्रैक्टिस रन्स। आई थिंक सो ये सेंस बनाता थोड़ा सा, बट एनीवे several months गए थे, few months गए। उसने सेवरल मंथ्स जरूर बोला था, लेकिन वो उसने अब आइडिया नहीं है। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे, तो मैं खुद लॉस्ट हो गया। लेट्स सी, आप सब अपना अपना लगा के रखें। क्या क्या सॉरी, एक मिनट पर सर दोबारा प्ले कर लें ये 20th क्वेश्चन। नहीं वो फिर टेस्ट इस तरह फेयर नहीं रहेगा। हम अगर गलत होगा तो हमें पता चल जाएगा जब हम ऐप पे सबमिट करेंगे। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो गलत हो गया ठीक है, गलत हो गया, हमारा एम नहीं है पूरे ही सही करना। हमें बस एम ये है कि हमें पता चले हम किस स्टेटस पे हैं और कौन से पार्ट में गलती आ रही है। एनीवे, लेट्स मूव टू पार्ट 3। Part 3. You will hear 2 students called Jane and Kieran talking about books. First, you have some time to look at questions 21 to 25.
Now listen carefully and answer questions 21 to 25. So, Jane, you'll be off to Denmark soon to do your work placement. Yes, I'm really looking forward to it. And I've just started packing up all my books to put in storage. Well, I hope they don't get spoilt. It's okay. My grandfather works in a bookshop, and he told me how to pack them. Oh, that's helpful. He says you have to support the spine, otherwise the paper can come away from the cover. Yeah, that's obvious. He also told me to pack them flat in the box, not on their side. Again, because they can bend, and if you leave them like that for, say, a year, it's quite hard to get them back to their normal shape. Well, it's pretty clear that ruins them. But a lot of people just can't be bothered to protect their books. He always says it's such a shame that publishers don't use better quality paper. It's the acid in the paper that causes the problem, isn't it? Yeah, that's why old books go yellow. You know, some of the books my grandfather's given me are like that already. Oh. I should dump them really if they're going to deteriorate further, but I'd feel bad. They'll always remind me of him. He's quite a collector, you know. Well, if they're important to you. Yeah, I'd regret just throwing them away. You know, maybe it's because I was taught to treasure books, but I hate seeing students force open the pages of paperbacks. They press so hard they end up breaking the spine. I know. But unfortunately, paperbacks aren't designed to last a long time, and people know that. Hardbacks aren't quite as weak. Yeah, they're different, I suppose. But I still don't think people value hardbacks like they used to. Well, they aren't decorative, are they, like other objects? Plus, nowadays, people don't keep them out on shelves as much as they used to. That's such a pity. When I visit someone, if they have, say, a colourful book on a table, it's the first thing I'm drawn to. I agree. And book covers can be a work of art in themselves. Some are really eye-catching. I've always been taught to handle books carefully. If you watch someone take a book off a shelf, well, they usually do it wrong. Ah, my grandfather says you should put your hand right over the top of the book. Or, if you can't do that, pull the other books on the shelf aside so that you can hold the whole cover. When did you learn all this? He watched me pull a heavy book off the shelf when I was small, and it fell on the floor and broke apart. Oh dear. Oh, I can still remember it. You know what I really like? What? The smell of new books. Me too. My parents used to laugh at me when I was a kid because I loved putting books up to my nose, almost as much as reading them. New books aren't cheap though, are they? I guess we're lucky we can buy them. My grandfather stocks second-hand books as well as new ones, and they don't smell quite as good. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. I'd love to have a bookshop like your grandfather. What's it like? Well, it's quite big. It's got 2 floors and an attic, and he stocks all kinds of books, really. I guess he treasures things like first editions and other rare books. Yeah, you might think he'd keep those in the attic or somewhere. So they'd be hidden? Yeah, but he likes people to know that he has them. So he puts them out in the shop, but makes sure you need a ladder to get them. Right, that would prevent any thefts. Uh-huh. Does he stock books for children? He does. He particularly likes to encourage kids to read. He always says that he used to sit under the stairs as a child with a pile of books and read them all.
Is that where he keeps them then? Not exactly. He's got a dedicated area on the ground floor with cushions, so that parents can enter with their toddlers, go there and spend some time reading to them. Oh, cool. And then there's a place for pushchairs by the front door, and a cafe if anyone needs refreshments. That's good to know. As I said, it's a big shop, and there's a storage area out the back as well. Oh, what does he keep there? Books he wants to throw away? He hardly ever throws anything away. He just leaves unwanted books by the front door for customers to take. Well, that's very nice. Yeah. And books people or institutions have requested, they all go at the far end. Oh. He thinks it's best to keep these out of the main shopping area as they're boxed and new. Did you get your course books from him? Naturally. He stocks books for a lot of the colleges. He used to keep these books on the first floor, but now there's a new university in my hometown. He's moved them downstairs to attract the students. They're actually part of the coffee shop, on low shelves all around it. Pretty central then. You'll have to take me there sometime. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. सर वो जो क्वेश्चन था जिसमें आपने ऑन द डिस्प्ले लगाया था ये वाला जी आई थिंक इधर आएगा मोर अट्रैक्टिवली डिजाइंड अच्छा, मोर अट्रैक्टिव। चले ऐसा करते हैं, आप उसको सी अपने पास लिख के रखें, तो एंड पे जब हम सबमिट करेंगे ना आंसर, तो तब इसको देखते हैं कि क्या था क्या नहीं। ठीक है, ओके जी भी सी लगता है वैसे। अपने आंसर्स बस अपने पास सेव करके रखें। बस आखिरी पार्ट रह गया, 10 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। Part 4. You will hear part of an environmental studies lecture on tree planting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Change. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Tree planting now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong अच्छा गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना ये पार्ट पहले किया हुआ है, क्योंकि मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना तो मुझे वो शो भी होता है, तो शायद मैंने ये वाला पार्ट पहले कभी किया है। तो आप बस ऑडियो पे फोकस करें, यहाँ पे ना देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद मैं जो आंसर ऑलरेडी मेंशन हो, सही है गलत है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पहले से हुआ हुआ पार्ट। आप ट्राई करें अपना, ठीक है। place, it can do considerably more. Now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong place, it can do considerably more damage than good, failing to help either people or the environment.
Reforestation projects are currently being undertaken on a huge scale in many countries, and it's crucial that the right trees are selected. A mix of species should always be planted, typical of the local natural forest ecosystem and including rare and endangered species, in order to create a rich ecosystem. It's important to avoid non-native species that could become invasive. Invasive species are a significant contributor to the current global biodiversity crisis and are often in competition with native species and may threaten their long-term survival. Restoring biodiversity that will maximize carbon capture is key when reforesting an area, but ideally any reforestation project should have several goals. These could include selecting trees that can contribute to wildlife conservation, improve the availability of food for the local community, and maintain the stability of soil systems. Meeting as many of these goals as possible, whilst doing no harm to local communities, native ecosystems, and vulnerable species, is the sign of a highly successful tree planting scheme. To ensure the survival and resilience of a planted forest, it's vital to use tree seeds with appropriate levels of genetic diversity, the amount of genetic variation found within a species essential for their survival. Using seeds with low genetic diversity generally lowers the resilience of restored forests, which can make them vulnerable to disease and unable to adapt to climate change. Choosing the right location for reforestation projects is as important as choosing the right trees. Ultimately, the best area for planting trees would be informally forested areas that are in poor condition. It's better to avoid non-forested landscapes, such as natural grasslands, savannas or wetlands, as these ecosystems already contribute greatly to capturing carbon. It would also be advantageous to choose an area where trees could provide other benefits, such as recreational spaces. Reforesting areas which are currently exploited for agriculture should be avoided, as this often leads to other areas being deforested. Large-scale reforestation projects require careful planning. Making the right decisions about where to plant trees depends on having the right information. Having detailed and up-to-date maps identifying high-priority areas for intervention is essential. Drone technology is a useful tool in helping to prioritize and monitor areas of degraded forest for restoration. In Brazil, it's being used to identify and quantify how parts of the Amazon are being devastated by human activities, such as rearing cattle and illegal logging. A good example of where the right trees were picked to achieve a restored forest is in Lampang province in northern Thailand. A previously forested site, which had been degraded through mining, was reforested by a cement company, together with Chiang Mai University. After spreading 60 centimetres of topsoil, they planted 14 different native tree species, which included several species of fig. Figs are a keystone species because of the critical role they play in maintaining wildlife populations. They are central to accelerate the speed of the recovery process by attracting animals and birds which act as natural seed dispersers. This helps to promote diversity through the healthy regrowth of a wide range of plant species. Unlike the majority of fruit trees,
Figs bear fruit all year round, providing a reliable food source for many species. At this site, for example, after only 3 rainy seasons, monkeys started visiting to eat the fig fruits, naturally dispersing seeds through defecation. Reforestation projects should always aim to make sure that local communities are consulted and involved in the decision-making process. The restoration of mangrove forests in Madagascar is an example of a project which has succeeded in creating real benefits for the community. Destruction of the mangrove forests had a terrible impact on plant and animal life, and also badly affected the fishing industry, which was a major source of employment for local people living in coastal areas. The reforestation project involved hiring local people to plant and care for the new mangrove trees. Millions of resulted in the return of a healthy aquatic ecosystem. The mangroves also act as a defence against the increased threat of flooding caused by climate change. What's more, the local economy is more stable, and thousands more Madagascans are now able to send their children to school. One other important point to consider. अच्छा guys, That is the end of part 4. You now तो उम्मीद है आप सबने किया होगा। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो ऊपर थे ना, वहाँ पे ऑलरेडी मुझे शो कर रहा था क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन एनीवे मेरा जो दोबारा वो था वो भी सही आ रहा था, सही भी आ रहा था। 3-4 वर्ड्स ना ऑलरेडी लिखे थे, शायद मैंने ना कभी ये पहले ये वाला पार्ट किया है, बट एनीवे लेट्स सबमिट। 34 आए हैं जी आउट ऑफ 40। तो इसमें क्या गलत हो सकता है? हमारा पार्ट 1 मेरा बिल्कुल ठीक था, आप सबका कैसा है? किसी का पार्ट 1 गलत हुआ है? ये थर्ड ही है यहाँ पे। फिर उसके बाद पार्ट 2 में 18th वाला क्वेश्चन गलत था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर। हाँ, पार्ट 1 बिल्कुल ठीक था। पार्ट 2 ये सी और ई ये ठीक था, और ये भी 13 और 14 ये भी ठीक था। हाँ, ये गलत हो गया मार्क, इसका है आंसर ए, इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ठीक है, फिर 19 और 20 भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 में काफ़ी गलतियाँ मेरी, लेट्स सी। अच्छा, इसका आंसर ए है, कॉमन सेंस की बात थी यहाँ पे, ओवर प्रोटेक्टिव मैंने लगा दिया। पार्ट बी इसमें सी था, ये भी सही है। अच्छा, ये मेरा ए ठीक है, आप कोई कह रहा था जिसमें मोर अट्रैक्टिवली डिज़ाइन आता है, लेकिन ये एनीवे ठीक था। फिर वाइल्ड टेकिंग ये भी ठीक थे दोनों पार्ट्स। 26 में मेरे वाओ काफ़ी सारी गलत है, और सिर्फ एंड वाला ठीक है। उफ, यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं मेरी। ठीक है, अच्छा पार्ट 10 में आते हैं। पार्ट 10 माशाल्लाह सारे ठीक है। ये मेरे लिए तो बहुत रेड फ्लैग रहा है। इसमें इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, तो मुझे इसका मतलब इसमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एनीवे आप सब बताओ आपका क्या स्कोर आया, कितने गलत हुए आप लोगों के, कोई बताना चाहेगा? पार्ट 4 ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है।
सर फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट था ना वो इजी थे और जो सेकंड था वो डिफिकल्ट था। सेकंड डिफिकल्ट लगा आपको? यस सर सेकंड पार्ट डिफिकल्ट। अच्छा, सेकंड कंपैरेटिवली हुआ मुझसे, बट थर्ड पार्ट में मेरी इस वाले क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक था। अच्छा जी, और कोई हमारे लिए बताना था? फोर्थ पार्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था, हमने 3 तो छोड़ ही दिए, लिखे ही नहीं। फोर्थ पार्ट में अगेन मैंने इसको पहले किया हुआ है और इसमें कुछ जो थे ना पहले से किए होंगे और शायद मैंने आधे करके छोड़ दिए होंगे। पहली बार मुझसे भी ऐसे ही हो रहा था ना, कुछ किए हैं बाकी छूट गए। ऐसा मैं आपको दिखाया था, कहीं कहीं लिखा आ रहा था, जिस तरह मैं इधर करूँ तो लिखा आ रहा है ये देखो डिजीज सेव, तो मतलब पहले मैंने किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा था फ्लडिंग, देखो फ्लडिंग नहीं लिखा आ रहा। इसका मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा ही हुआ था कि कुछ मैंने लिख दिए थे, कुछ में से लिखे ही नहीं गए थे, ये नहीं लिखा गया था। और ये भी देख लो, यहाँ पे भी शायद ना लिखा गया हो, सेव इन्फो नहीं होगी। हाँ ये देखो मंकी भी नहीं लिखा गया होता। तो आपने 3 छोड़ दिए, मैंने पता नहीं कितने छोड़े होंगे फर्स्ट टाइम। लेकिन हाँ, अब देखो शायद सेकंड टाइम मैंने सेम पार्ट किया तो मेरा सारा ही कंप्लीट हो गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो यार वो पूछ सकता है, ठीक है। इसको मैंने सही, अब जिस तरह मेरे 34 आए हैं, इसमें 7.5 बैंड आया, इसको मैंने सही इसी तरीके से किया कि अ, मैं वैसे पॉडकास्ट मैंने अभी तक नहीं सुनी, लेकिन मैं इंग्लिश मूवीज काफी देखता था और काफी अरसे से मुझे शौक है इंग्लिश मूवीज ही देखने का। मैं नहीं देखता था बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता था, और गाने वगैरह तो मैं वैसे नहीं सुनता, लेकिन मूवीज जो है मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश ही देखूं। इस वजह से शायद मेरी ये स्पीकिंग, ये लिसनिंग स्किल अच्छी है। और सेकंडली एक और बात है, मैं दुबई में 3 अरसा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो वहाँ पे मैंने जिस कंपनी में काम किया वहाँ पे बोली ही इंग्लिश जाती थी। तो शायद इस वजह से मेरी ये लिसनिंग और स्पीकिंग और ये जो स्किल है थोड़ी बहुत इन्हांस है। जी मिस्टर ताहा, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।